Okay, so I am trying to calculate this voltage across the C. Okay, so this in output loop, I am applying KCL and I am applying voltage division. So if I want to write V naught here, so V naught is the voltage across this capacitor, and capacitor reactance is given by 1 by j omega C. So j xc R0 minus j xc AVD. Okay, and we know this xc is what, omega c is what, j 2 pi, क्या आएगा 2 pi J2 pi FC. fc. Okay, this j 2 pi fc. Okay, so put these values here and calculate what is v naught. So I am putting here xc. Okay, so that is 2 pi fc. Okay, and j, because minus j equal to minus 1 by j. Okay, so minus j equal to 1 by j. Okay, so I minus j equal to 1 by j r naught, make it positive, and this will be your 1 upon j 2 pi fc, f into c into a vid. Okay, now I know what is my gain, open loop gain. So open loop gain formula is v naught upon v, what the difference we are applying at the input. Okay, so this will give me what, a, if I multiply this one, this will give me 1 I 2 pi r0 fc. Okay, and उससे cancel हो जाएगा, so I will get a upon 1 plus j 2f r naught fc, where f is the frequency, where f is the frequency. Okay, now suppose if I say f naught equal to 1 minus 2 pi, okay, 2 pi r naught c. If I say this f naught is equal to 1 upon 2 pi r naught c, okay, so then I can write this formula as a upon 1 plus j, okay, f upon f naught. ऐसा लिख सकते हैं क्या, 1 plus j Yes, f sir. upon f naught. Okay, so where ये मिटा दूं, हाँ सर. so where a open loop gain is equal to a upon, okay, 1 plus j f upon f naught. Okay, now this is a complex quantity. Okay, so if I want to write the magnitude, okay, of AOL, so magnitude कितना होगा, A upon square root of 1 plus f by f naught the whole square. okay, so 1 plus f upon f naught का होल स्क्वायर, ये इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, और फेज एंगल कितना हो जाएगा, सर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, हाँ, x स्क्वायर ए. ओके सर. ओके, तो यू कैन मल्टीप्लाई इट बाय 1 माइनस j से मल्टीप्लाई कर सकते हो ऊपर नीचे. Minus f by f naught phase. Okay, and you, if you calculate your phi, okay, so phi will come as minus tan inverse f upon f naught. Okay, so this is 1 plus 1 plus this is a complex quantity, 1 plus j something. Okay, if you solve this, so magnitude is come a upon this one, and phi is coming tan inverse square phi upon phi naught. Okay, now what is a here? Okay, so AOL is open loop gain. Okay, AOL is open loop gain, we know. Okay, open loop gain. What is A? Okay, A is, if f is 0, if f is 0, this quantity is 1, so AOL equal to A. Okay, so this is open loop gain at frequency f equal to 0 hertz. Okay, so from here we can see that my open loop gain is depend on the frequency. Okay, and f naught is the breaking frequency. Okay, break frequency for op amp. Okay, break frequency or cutoff frequency. F naught is break frequency or cutoff frequency.
now I want to measure how my open loop gain varies with the F not equals to 0 hertz लिखा है सर. हाँ f इक्वल टू यहाँ पे 0 कर देंगे f, ये Yes sir. हो जाएगा, ठीक है. सो a नॉट इक्वल टू a, Okay sir. ठीक है. सर स्क्रीन पिन कर दीजिए. हाँ पिन, अब पिन कैसे होता है, पिन रिमूव कर दूं कि पिन पिन फिक्स कर दूं? पिन फिक्स कर दो सर. अब मेरे से यहाँ होता नहीं ना. सर मोबाइल से देख रहे हैं तो जा रहा है दोबारा. सतीश उसको पिन कर दो. ओके मेरे में ऑप्शन ही नहीं आ रहा पिन करने का. सर स्पॉटलाइट जैसा कुछ, स्पॉटलाइट जैसा कुछ ऑप्शन नहीं, ग्रीन, ये कुछ ग्रीन आ रहा है. स्पॉटलाइट तो कुछ आ नहीं रहा है. हो गया सर, हो गया सर, हो गया पिन, हाँ हो गया पिन. ठीक है. So now I want to draw this open loop gain with frequency. Okay. So if I draw this open loop gain, so I know if I write open loop gain, okay, in dB, in decibel, okay. So what is the formula for open loop gain in dB? Okay, so this formula is 20 log of AOL. Okay, जब भी आप गेन को डेसिबल में लिखना चाहते हैं, डेसिबल में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला क्या है? AOLF in decibel equal to 20 log of magnitude of AL. Okay, now I know what is magnitude of AL. This A, it is given by A upon under root 1 plus F upon F naught square. Okay, log को खोल लो, so this become 20 log A minus, okay, 20 log under root 1 plus F upon F naught का square. Okay, so this is my dB, how my gain is varying with frequency. Okay, now I'm applying different frequencies here. Okay, suppose that my open loop gain is A is given 10 raised to power 5, 2 into 10 raised to power 5. Okay, 2 lakhs, 2 into 10 raised to power 5. Okay, and say suppose my cutoff frequency is 5 hertz. Okay, for given just 2 pi FRC है, तो कुछ constant value होगी. Suppose for this op-amp the cutoff frequency is 5 RC. Okay, now you apply different frequency on this op-amp. Okay, input. So what will happen? So when my F equal to 0 hertz, okay, when at F equal to 0 hertz, okay, तो 0 hertz पे मेरा ओपन लूप गेन क्या होगा? 2 into 10 to power 5. Okay, so AOL F in dB पे क्या होगा? Okay, 20 log A कितना है? 2 to 10 to the power 5. So if you solve this one, it will give 20 log, okay, A is 2 into 10 to the power 5, and if you solve this one, this will give you around 106. Okay, 106.02 dB. Okay, these values are in dB, decibels. तो सेकंड वाला टर्म 0 हो जा रहा है ना? Second term 0 हो जाएगा, 0 लगाते ही. Okay, now if frequency is 5 hertz, that frequency is 5 hertz. Okay, in that case your AOL सर हाँ. बेस कितना है सर? 10 10 है बेस सर? हाँ 10 है. सर इतना तो सर थोड़ा मुझे लगता है ज्यादा होना चाहिए सर. भी 5 ऊपर चला जाएगा, 12 के आसपास होगा. 5 इधर आ जाएगा, सर तो 100 तो हो गया. 100 हो गया सर. बाकी क्या बचा? सर प्लस 20 log 2 सर. हाँ 10 है ना? log 2 का सर 0.6. यस सर 0.69 होता है ना सर? log 20 कितना आता है? log 2 निकाल के देखो. log मैंने निकाल के देखा है, इसे पता है 106 आएगा. ठीक है, और स्टैंडर्ड बुक से लिया है तो गलत तो सही आ रहा है सर. इतना निकाल के देखा मैंने. ठीक है, नाउ सपोज इफ यू टेक दिस एट 5 हर्ट्ज. ओके, सो ये तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड है ही नहीं, पहले टर्म तो ये तो ऐसे जाएगा 106.02 माइनस में. ओके, इफ यू डू माइनस दिस विल कम एट 3.01.
3 point minus this term will come 3.3 point. If you put 5 here, okay, so this will give you 5 Sir, hertz. हाँ, f equals to 5 पे a का वैल्यू मतलब ये 2 तो into 10 ये तो हाँ सेम ही है, ये ये सेम ही है, फ्रीक्वेंसी पे ये टर्म डिपेंड कर रही है, ओके। या ये एफ नॉट इज 5, इसमें 5 रख दिया, 5 पर क्या हो गया, 1 हो गया, √2 आ गया, ठीक है। ओ समझ गया So ओके if you, सर so if you solve this one, it will give you 3.01, okay, minus. So it will come minus, you do minus, it will come around approximately 103, okay. तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है? So cut off frequency का definition क्या है? Cut off frequency is the frequency at which the loss of gain is 3 dB. मतलब इनिशियली जीरो पर जितना जितना आपको वोल्टेज गेन मिल रहा है, ओके, व्हेन यू अप्लाई कट ऑफ फ्रीक्वेंसी that decreases, okay, by 3 decibel, okay, that is called your cutoff frequency, okay. Now suppose after cutoff frequency you multiply by frequency by 10, okay, or you make frequency 10 fold. So suppose this is 5k, now you make it 50 hertz, 50, yes, hertz, 50 hertz, okay. So your a not L f dB value will be, I'm directly writing values now, okay. This is already solved, okay, 106.02, this will become 20.04, and if you solve this one, this will come around 86, okay. Now I'm keep on increasing the frequency tenfold, पहले कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के बाद में, ओके। तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी तक क्या होता है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी तक आपका आउटपुट गेन होता है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है। इस कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे क्या होता है, आपका √2 आ जाता है, ओके। सो व्हाटएवर गेन इज इनिशियली of that gain, 70% voltage gain you will get, okay. So they say this is constant, and after that if you increase the frequency, your voltage gain start drop, okay. So now suppose this is 86, now if I make f equal to 500 hertz, okay, in that case my AOL, okay, dB value is coming 66. Similarly, now if I make multiply by 10, I make it 5000 hertz. My A not L f dB value is coming 46. Okay, 46, 26, 66. Okay, and then it is showing 5000 hertz. Okay, 5000 hertz means 5 kilohertz. 5 kilohertz. Okay, 5 kilohertz is showing value as 26, and then at frequency equal to 50 kilohertz, okay, AOL f dB is coming 20, and add हाँ सर 26 50 के लिए सर तो 46 निकाल दिया होगा था सर। ना सर हाँ अच्छा सर 5 किलो हर्ट्ज पे 46 आएगा सर। किस पे, 5 किलो हर्ट्ज पे, सर 5 किलो हर्ट्ज पे ये हाँ सर 46 लेट मी चेक, 46 आना चाहिए, यस 46 आएगा, करेक्ट, ओके। और सर 50 किलो हर्ट्ज पे सर 26 आएगा। भी 50 हर्ट्ज पे आपका 86 आ रहा है, 86 आ रहा है, फिर 66 आ रहा है, ठीक है, एंड देन इट विल 46, ओके, एंड देन इट इज कमिंग 26, ओके। एंड सिमिलरली इफ यू डू इट एट 50 kg हो गया, 50 के बाद में 100 किलो हर्ट्ज, इफ यू मेक इट 100 किलो हर्ट्ज, ओके, 100 किलो हर्ट्ज, ओके। So you'll get AOL f dB equal to, they have given this 20, okay, now double किया, अभी 10 times नहीं किया है, and if you suppose take f equal to 1 megahertz, okay, then your AOL f dB, okay, that becomes almost 0, okay. So what is the meaning of this calculation? So if I draw the graph of frequency, okay, if I draw the open loop gain versus frequency, so after cutoff frequency, as I make my frequency tenfold, okay, my voltage drops by how much, 20 dB, okay, that is a constant slope of minus 20 dB, okay. As you make tenfold, every time after cutoff frequency your gain starts dropping, okay, by 20 decibel for each 10-fold in frequency, okay. So if I draw the graph, so if I
draw the graph of open loop gain, okay, versus frequency. Okay, these are called Bode plots. Okay, so it will be almost constant. Okay, and then up to here their loss will be minus 3 dB cutoff frequency. Okay, and after that it decreases by slope. Okay, minus 10 by minus 10 dB, minus decibels. Okay, for a decade change in frequency means 10-fold change in frequency. Okay, and so at some frequencies now here it is for 1 megahertz, it's become 0. Okay, so this is my AOL. Okay, F AOL of function of frequency, AOL function of frequency in dB. Okay, similarly if I try to calculate frequency, okay, my phi phase change in phase, so when you apply input, okay, because of this capacitive effect your frequency also get changed. Okay, frequency also is function of, or the phase difference is also function of your frequency. Okay, so if I say phase angle, okay, this phase angle also decreases from 0 to minus 90 degree. Okay, for example my formula is what? Phase formula is minus tan inverse f upon f naught. Okay, so if I apply different frequency, say at f is equal to 0 hertz, okay, so my phi will be 0. Okay, similarly if I apply 5 hertz, f equal to 5 hertz, okay, my phi will be what? Minus 45. And if I write f equal to 50 hertz, my phi will be minus 84.29. Okay, similarly other thing we calculate at f equal to 500 hertz, okay, my phi will be minus 89.43, and f equal to 5 kilohertz, my phi will be, okay, 89.94 minus 89.94, so on. Okay, so at I'm writing at frequency 2 it will keep on decreasing at 1 megahertz. Okay, my phi will be around minus 90 degree. So when you apply some input, okay, that input also output also get phase change because of this capacitive effect. Okay, now why I am discussing these things? Okay, because I want to discuss filters, okay, with using op-amp. So op-amp से filter circuit कैसे बनाते हैं? Okay, that will see. So here it is clear, the open loop Sir, voltage gain is phase means what? मतलब किस के बीच में? आउटपुट और इनपुट के बीच में भी आपको फेज लगा रहे हो, आपका इनपुट दे रहे हो ऐसे. ओके, आपको पता है कैपेसिटर में आपका जो फ्रीक्वेंसी होता है, जो वोल्टेज होता है वो minus 90 डिग्री लैग करता है बिहाइंड. ओके, तो ये ऐसे करेगा तो ये इस तरह कुछ आ जाएगा. ठीक है, करंट लीड्स वोल्टेज बाय पाई बाय 2. वोल्टेज तो बैक लैग रहता है ना. यस सर, कैपेसिटर में. ओके, यस सर. so this is the open loop gain is a function of your frequency. Now I want to discuss filters. Okay, so put the heading active filters. Okay, active filters का मतलब there are variety of type of filters. Okay, उसमें से सबसे जो हमारे लिए यूज में है that is low pass filter. Okay, so low pass filter क्या करता है? This is my gain. Okay, voltage gain. Okay, and this is my frequency. So if I want to make low pass filter, लो पास फिल्टर क्या होता है? लो पास फिल्टर लो फ्रीक्वेंसी को पास करने का हाई फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक करे. सो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को तो पास करता है, दैट मींस एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए तो गेन कांस्टेंट है. ओके, और उसके जो आगे की हाई फ्रीक्वेंसीज है एफएच से एफएच जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है तरह से, आफ्टर दैट इट डिक्रीजेस, गेन डिक्रीजेस. सो जिस रेंज के लिए ओके
जिस फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए वो गेन कांस्टेंट रहता है, ओके, बिकॉज इट इज फॉर लो फ्रीक्वेंसी में गेन कांस्टेंट है और हाई फ्रीक्वेंसी में गेन कम हो रहा है, तो इसको बोलते हैं हम लो पास फिल्टर। ओके, सिमिलरली इफ आई सर टेक, मतलब लो पास फिल्टर एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद नहीं पास करता है। नहीं मतलब उसमें गेन में लॉस आना शुरू हो जाता है ना, अभी हमको तो गेन कांस्टेंट चाहिए ना, हमको हाँ सिग्नल लगा हाँ। रहे हैं तो हम पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को पास करना चाहते हैं, ओके, लो यस फ्रीक्वेंसी, सर। तो लो फ्रीक्वेंसी के लिए गेन कांस्टेंट है, ओके, हाँ। उसके आगे आपका लॉस होना शुरू हो जाता है, ठीक है, अच्छा अच्छा तो दिस इज लो पास फिल्टर। ओके, सिमिलरली इफ आई से सर हाई इसका पास फिल्टर, स्लोप भी सर हाँ इसका स्लोप भी उतना ही होगा 28 dB हाँ, का इसका स्लोप डिके। भी, इसका स्लोप -20 dB होगा, ओके, -20 dB, और इस पॉइंट पे जो जो होगा लॉस होगा वो 3 dB होगा, ओके, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी में। एंड सिमिलरली हाई पास क्या होता है, हाई पास में क्या होगा कि अगर आप लो फ्रीक्वेंसी दे रहे हो तो उसमें आपको लॉस होगा, ठीक है, ये बढ़िया, और बाद में गेन कांस्टेंट हो जाएगा फ्रीक्वेंसी पे, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जिसके बाद में आपका गेन कांस्टेंट हो जाता है, ओके, दैट इज कॉल्ड योर हाई पास फिल्टर, वोल्टेज गेन एंड दिस इज द फ्रीक्वेंसी का, दिस इज हाई पास फिल्टर, ओके। सर हाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है सर। हाँ हाँ, बोलो। ये मतलब हम्म, लो पास एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के ऊपर नहीं पास करता है। पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के ऊपर गेन फ्रीक्वेंसी का स्ट्रॉन्ग फंक्शन हो जाता है, ओके, अच्छा अच्छा। बहुत फास्ट गिरना शुरू हो जाता है, ओके सर। वेरिएशन आ रहा है, हमको तो कांस्टेंट गेन चाहिए ना, जैसे यस सर। हम जैसे हम लेते थे, ऐसा ऐसा रीजन चाहिए जहाँ पे गेन, ऐसा रीजन चाहिए फ्रीक्वेंसी के जहाँ पे हमको गेन कांस्टेंट मिले, यस सर। यहाँ पे फास्ट डिक्रीज कर रहा है, ओके, सिमिलरली यहाँ पे भी चेंज हो रहा है, और इस फ्रीक्वेंसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के बाद, इस लो फ्रीक्वेंसी के बाद में आगे की जितनी फ्रीक्वेंसी लगाओगे सैचुरेशन रीजन है। उनके पास में आपका जो गेन होगा वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। ओके सर। सो अगर मुझे ये फ्रीक्वेंसी, ये लो पास फिल्टर है, ये हाई पास फिल्टर है, सिमिलरली होता है बैंड पास फिल्टर। बैंड पास फिल्टर क्या होता है, दिस इज वोल्टेज गेन, okay, and this is the frequency. Now this voltage gain what will do, it will pass a band, उस बैंड के आगे वो चीजों को पास नहीं करेगा, ओके, फॉर एग्जांपल इफ आई टेक these frequencies, ओके, सो वो क्या करेगा कि इस रेंज को तो पास करेगा, ये पास बैंड, इस फ्रीक्वेंसी को तो पास करेगा, ओके, बाकी इधर उधर की फ्रीक्वेंसी को रोक देगा, स्टॉप बैंड, ओके, तो एक पर्टिकुलर रेंज में ही, दैट इज कॉल्ड FL टू FH, तो उसको पास करेगा और बाकी को वो पास नहीं करेगा, दैट इज कॉल्ड पास बैंड, ओके। सिमिलरली इफ आई से रिजेक्ट बैंड, तो वो क्या करेगा, सारी फ्रीक्वेंसी को पास करेगा एक्सेप्ट ए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज, ओके, से दिस इज फ्रीक्वेंसी and say this is frequency, okay, so this is FH, FL, okay, so this gain, so एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रेंज को वो रिजेक्ट करेगा, बाकी बाकी सबको पास करेगा, सर लेफ्ट वाला का कौन सा नाम है, कौन सा रिजेक्ट, फिल्टर? बैंड रिजेक्ट पास, बैंड रिजेक्ट, ओके, बैंड रिजेक्ट, लेफ्ट लेफ्ट वाला सर। पास बैंड, पास में। पास बैंड फिल्टर, ओके, सो हमको नाउ वी हैव टू यूज ओपैम्प, ओके, ओपैम्प को यूज करके हमको ये दिखाना है कि ओपैम्प कैसे फिल्टर की तरह काम करता है, ओके, सो नाउ वी हैव टू यूज आवर ओपैम्प, ओके, सो पुट द हेडिंग लो पास फिल्टर यूजिंग ओपैम्प, सो लो पास फिल्टर, okay, so for low pass filter what we'll do, we have a op-amp, okay, minus plus, and then we have a resistance, okay, here, and we have feedback here,
and then we have a RL. So this we have a RL. This is given RF. Okay, R1, RF. Okay, and then we have here V capacitor. This is grounded. Okay, and here we have a resistance V1, and this is called V input. Okay, and this is R. Now calculate what is the output of this circuit. What is the output of this circuit? Okay, so if I want to calculate the output of the circuit, क्या आएगा? ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, non-inverting. नॉन इन्वर्टिंग है ना? Okay, so this is C. So first we have to take what is V1. V1 कितना है? Sir, XC upon XC plus R into V. JXC upon R upon minus R minus R J minus JXC into V. into V input. Okay, और इसको हम कैसे ले सकते हैं? 1/2 pi FC J, okay, upon 1 plus R plus 1 upon J 2 pi FC. Okay, अभी क्या सेम ही है. So this will become 1 plus okay J 2 pi FC. Okay, or इधर V input था ये V input upon this is V input. Okay, so this is my V1. Okay, so यहाँ पर V1 लग रहा है, so V output will be what? 1 plus RF upon R1 into V1. Okay, and this V1 value we have already calculated. So V1 is 1 plus RF upon R1, and V1 is V input 1 plus J 2 pi FC. Okay, now what we can do? 2 pi RFC. 2 pi RFC. RFC. 2 pi RFC. Okay, now this is gain. A is gain. Okay, and this V input. Okay, इसको मैं ले सकता हूँ 1 plus F upon F naught. Okay, J F upon F naught. Okay, ठीक है, A इसको AF close loop gain. Okay, this is V output. So from here I can calculate what is AF क्या है? AF is given the name 1 plus RF upon R, and this name they are given pass band gain of the filter. Okay, pass band gain of the filter. Okay, and F is the frequency of the input. F is the frequency of जो input लगा रहे हैं. F is the frequency input. Okay, and FH इसको FH बोल दो, हाई का हाई, इसके आगे की सारी पास है ना, तो इसको FH. Okay, so FH का मतलब है कि this is 1/2 pi okay RC, and that is equal to high cutoff frequency of the filter. High cutoff frequency of the filter. High cutoff frequency of the filter. Okay, now I want, this is again complex quantity. If I want to get the magnitude, जैसे ये सेम पहले से आ गया एकदम से expression. Okay, so if I want V naught upon V input का magnitude. सर वो आपने राइट हैंड साइड पे क्या लिखा है? हाई फ्रीक्वेंसी. High cutoff frequency of the filter. High cutoff frequency of the filter. Okay, now this will become AF. Okay, 1 upon F upon FH का square, and phase angle again minus tan inverse F upon FH, वो सेम ही आ गया जो पहले वाला था. ठीक है, now at very low frequency what will happen? Now we see we want to get at very low frequency. So at very
लो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, लो फ्रीक्वेंसी पे यू गेट V आउटपुट अपॉन V इनपुट, ओके, ऑलमोस्ट इक्वल टू AF, ओके, एंड at F equal to FH, if you put F equal to FH, okay, then you get V naught upon V input equal to 0.707, okay, AF. And similarly at high frequency क्या हो जाएगा, if frequency is greater than FH, okay, if frequency is greater than FH, okay, इसको कांस्टेंट मान लेते हैं, 0 से लेके इसको ऑलमोस्ट कांस्टेंट मान लेते हैं, your V upon V input, okay, that is less than AF, okay, तो आपका ये गिरना शुरू होता है, and if a